हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों, वो स्लो प्रोसेस होती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो मेजरेबल स्पीड के साथ में होती है। और रिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस is very slow occurring through a series of equilibrium states. उसके बाद irreversible process and irreversible process proceeds with a measurable speed. Second difference, can be reversed and cannot be reversed. इसके बाद रिवर्सिबल में जो वर्क ऑब्टेन होता है बच्चों वो मैक्सिमम होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम नहीं होता। सो वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम in a reversible process, and work obtained is not maximum. Work obtained is not maximum. Work obtained जो है वो maximum नहीं होता। Fourth difference, देखिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इनिशियल और फाइनल जो स्टेट्स रहती है हमारी सिस्टम की, उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमारा होता है। सो देयर इज an equilibrium between the initial and final states of the system. यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होता है रिवर्सिबल में। there is no equilibrium in the system. Fifth difference, it is difficult to realize in practice. ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है रियलाइज करना जो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस के अंदर, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको। सो इट कैन बी performed in practice. Next is sixth difference. यहाँ पे क्या होता है बच्चों, दोनों होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ क्या होती है हमारी रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। सो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड reactions takes place simultaneously. ठीक है, साइमल्टेनियसली। जबकि ये क्या होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। इट इज यूनिडायरेक्शनल
unidirectional. It is unidirectional and it proceeds only in forward direction. Only in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है बस, ठीक है। नेक्स्ट है 7 डिफरेंस। ये जो प्रोसेस है हमारी बच्चों रिवर्सिबल, ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक फास्ट प्रोसेस होती है। सो इट इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस, और ये क्या होती है हमारी फास्ट प्रोसेस। इट इज अ फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस। ये क्या है हमारी फास्ट प्रोसेस है, इट इज फास्ट प्रोसेस। तो देखिए बच्चों ये था हमारा डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, ये हमारी स्लो प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्या होती है सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड होती है एक मेजरेबल स्पीड के साथ में। रिवर्सिबल को हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि इरिवर्सिबल को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वर्क ऑब्टेन्ड यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता सिस्टम के अंदर। इसको डिफिकल्ट होता है रियलाइज करना प्रैक्टिस के अंदर, जबकि इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बहुत डायरेक्शन होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शंस हमारी होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। उसके बाद रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है रिवर्सिबल, और ये क्या है हमारी इरिवर्सिबल, यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और ये फास्ट प्रोसेस होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों 2 इंपॉर्टेंट मोड को, जिसके थ्रू जो सिस्टम है वो एक्सचेंज करता है एनर्जी को सराउंडिंग्स के साथ में, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हीट, सेकंड वन इज वर्क। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो टू इंपॉर्टेंट मोड्स by which a system can exchange energy with the surroundings, are कौन से हैं वो? फर्स्ट हीट एंड सेकंड वर्क, ठीक है। सो कौन से हमारे हीट एंड वर्क। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हीट को। तो देखिए एक्सचेंज जो है एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो हीट की फॉर्म में कब होगा? जब जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर्स के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। सो द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, in the form of heat, the exchange of energy takes place in the form of heat if the system and surroundings are at डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। उनमें क्या होगा? टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो जो हमारी हीट है बच्चों वो क्या हो जाएगी, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? तो हीट क्या है? एनर्जी का यहाँ पे एक्सचेंज होगा। हीट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो हमारी एक्सचेंज होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब सिस्टम एंड सराउंडिंग में क्या होगा? डिफरेंस होगा टेम्परेचर्स के अंदर। ऑलराइट, सो द हीट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी which is exchanged between the system and surroundings, ठीक है। Heat is the quantity of energy which is exchanged between the system and surroundings when both are at different temperatures.
different temperatures. इसके बाद आपको बच्चों पॉइंट नोट करना है, अगर जो सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर पे है सराउंडिंग के कंपेयर में, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जो है उसका लॉस होगा टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर जो सिस्टम है वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो लो है देन सराउंडिंग, तो वहाँ पे हीट क्या होगी बच्चों, गेन हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ द सिस्टम is at higher temperature than the surroundings, higher temperature than the surroundings, then heat is lost to the surroundings, and if the system is at lower temperature than the surroundings, lower temperature than the surroundings, then heat is gained by the system, or the amount of heat gained or lost by the system is represented by, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, is represented by Q, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मोड है जिसके थ्रू जो सिस्टम है वो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी को सराउंडिंग्स के साथ में। फर्स्ट है हीट एंड सेकंड वन वर्क। तो हीट क्या है, हीट की फॉर्म में जो हमारी एक्सचेंज होगा एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो जाएगा। तो हीट को हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी है एनर्जी की जो एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जब दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं, व्हेन दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, बोथ आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। और अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है सराउंडिंग से, तो हीट क्या लॉस्ट हो जाएगी टू दी सराउंडिंग में हीट जाएगी। और अगर सिस्टम का लोअर टेम्परेचर है सराउंडिंग से, तो हीट क्या है, गेन कर ली जाएगी, हीट ले ली जाएगी, गेन कर ली जाएगी बाय दी सिस्टम। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट गेन हुई है और लॉस की है बाय द सिस्टम ने जो हीट का जो गेन किया, लॉस किया, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय क्यू। ऑलराइट बच्चों, सो नेक्स्ट करते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। तो जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है बच्चों सिस्टम के द्वारा फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स से जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो उस टाइम पे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। और जब जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं की जाती, लॉस की जाती है सिस्टम के द्वारा टू द सराउंडिंग्स, वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को। सो when heat is absorbed by the system from the surroundings, it is taken as positive sign, इसके बाद when heat is lost by the system to the surroundings,
surroundings, it is taken as negative sign, taken as negative sign। तो वहाँ पे हम बच्चों नेगेटिव साइन लेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं वर्क को। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो एक्सचेंज है एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वो टू फॉर्म में होता है, या तो हीट या फिर वर्क। हीट को हम स्टडी कर चुके हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क को। तो वर्क जो है इस फॉर्म में भी जो एक्सचेंज होता है हमारी एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यहाँ पे जो वर्क है बच्चों वो हमारा मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, और हमारा जो हमारा ग्रेविटेशनल वर्क है वो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो वर्क में हम क्या स्टडी करें, डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू से करेंगे, और द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, the exchange of energy between the system and surrounding, between the system and surroundings can occur in the form of work, occur in the form of work, and work may be mechanical work, pressure volume work, or electrical work, and gravitational work, तो फर्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल वर्क को। फर्स्ट इज मैकेनिकल वर्क। सो मैकेनिकल वर्क क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल वर्क इज सेड टू बी डन, मैकेनिकल वर्क इज said to be done if the point of application of force, point of application of force moves in the direction of force, moves in the direction of the फोर्स। तो मैकेनिकल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जब जो हमारी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे फोर्स अप्लाई की गई है बॉडी पे, वो क्या है हमारी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मूव करती है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, हमारा मैकेनिकल वर्क हो रहा है। सो या फिर हम बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क इज defined as the force multiplied by the distance, force multiplied by the distance by which the force acts, by which the force acts। तो क्या हो जाएगा, that is वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में डी एक्स। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क, सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिकल वर्क इज defined as the product of electromotive force, that is EMF, and the quantity of electricity, flowing through the circuit,
दैट इज। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है सर्किट के थ्रू उसका। सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू EMF इंटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल वर्क को। ग्रेविटेशनल वर्क, सो ग्रेविटेशनल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल वर्क इज said to be done when an object is moved against the, मूव किया जाएगा उसको किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल जो हमारा वर्क है, ग्रेविटेशनल वर्क इज सेड टू बी डन। ग्रेविटेशनल वर्क कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as the weight multiplied by the height through which it is moved, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल वर्क इज इक्वल टू weight into me height. So gravitational work is equal to weight into height. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, that is equal to mg into me h. तो ग्रेविटेशन वर्क जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg into h के। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल वर्क। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आए इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।